Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So, finally, preparation time is getting over, and now it's the revision time. Now, I'm especially here to make a dedicated video out of it because this is a time where all those who are working very hard definitely want to clear this examination will definitely clear it, and this is the time when it decides whether you are going to clear your afcat examination or not, because I have given afcat and I have also cleared this examination, so I know this is a time where it requires the most of your attention. And also in this phase there are a lot of guys who commit mistakes. I'll tell you a straight and simple thing, guys. August 15 तक जितना नया टॉपिक उठाना है उठा लो, जितना नया टॉपिक पढ़ना है पढ़ लो, जितना नया टॉपिक खरीदना है, जानना है, नॉलेज गेन करना है कर लो. आफ्टर एफकेट रादर आफ्टर August 15th of August के बाद it should be a revision time. Now what do you mean by revision time is you are not supposed to pick out any new topic which you have not studied earlier. Rather, you will pick out all those topics which you have studied earlier which needs revision. Even though if you think that do not needs revision, but still I would urge you guys to go for revision, because that is the things which is going to give you marks, guys, and that is the thing which you are confident enough of. And for instance, I don't want it to happen though, but that question comes into your examination and you do not tend to remember that because you have studied 2 3 4 months before. I don't want it that to happen, and trust me, it hurts a lot. एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है जब वो एक नाम जो मैंने पढ़ा है वो याद नहीं आता है. सो डू नॉट डू दैट. ठीक है, बाय दिस टाइम योर स्ट्रैटेजी इज कन्फर्म्ड, व्हाट to study, what not to study. Let it be polity, geography, history, current affairs तो खैर आता नहीं है, डिफेंस अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स, वो सब हो गया, एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग. सो सारी चीज़ जो है ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं. जस्ट यू नीड दैट कॉन्फिडेंस इन यू, यू जस्ट नीड टू imbibe that confidence in you so that you can go there and sit for 2 hours straight and attempt the questions which you know. Fine. So for that confidence to gain, you have to study those topics which you have studied again and again. Okay, do not commit these mistakes, guys. Do not pick up those topics which are new. Start revising all those kind of stuffs which you have studied for the past 3 or 4 months, because until unless you don't do that revision, I'm afraid that you are not going to recall anything. Even today, if you ask me something which I've studied 2 months before, I will not tend to recall it 100%. I may recall for like say what 60 to 70%, but I cannot recall 100% what I've studied. Okay, exceptions are there, some genius will be there, but I don't want you guys to take chances on you, because it's a kind of examination which will come after 6 months again. Okay, it will take a whole new year for yourself to give the examination, to attend the SSB, to get medical, to get the merit list, and then going to the academy. It takes a whole lot of 1 year. I don't want you to waste this attempt. प्लान वाइजली. ठीक है, सबसे पहले क्या बोला मैंने, गो फॉर लाइक रिवाइज करो. आप August 15 तक का टाइम में रिवाइज करो. दूसरा, गो फॉर मॉक पेपर्स. हर रोज एक मॉक पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है. मॉक पेपर्स नहीं मिल रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो. ये दोनों में से एक चीज़ करना ज़रूरी है हर रोज, विथ टाइमिंग गाइज. 2 hours, 2 घंटे टाइमिंग के साथ डेडिकेट करना है, एंड देन उसके बाद आपका जो भी है करना है. ठीक है, रिविजन. 2 hours तो आप इसमें डेडिकेट कर रहे हो. इसके बाद का जो 2 घंटा है, 2 या 3 या 4 या 5, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लिमिट्स विच यू हैव, स्टडी, रिवाइज वट एवर यू हैव. रिमेंबर, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स गलती से भी नहीं छोड़ना है. हर रोज वापस रिवाइज करो एक एक चैप्टर को अगेन रिवाइज करो. क्वेश्चंस लगा के देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा के देखो. 33 + 18 या दोनों मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली. ये 50 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 40 सही करने हैं गाइस, तभी आपका जाके अच्छे मार्क्स आएंगे. रिमेंबर, कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है. आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज इफ कट ऑफ रीचेस बाय 175 और इवन 180. गर्ल्स के लिए तो आई एम सॉरी, आपको 200 टच करना ही है, क्योंकि जीडी फ्लाइंग अगर आप हटा देते तो जीडी में आपका हेल लॉट ऑफ कंपटीशन है, तो 200 लाना ही लाना है.
फॉर बॉयज ऑल्सो, अगर आप 200 टच कर सकते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गेट मेरिट इन ऑल्सो. थिंक लाइक इट्स नॉट लाइक अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करें तो इट्स नॉट योर ओनली एम टू only clear the examination. You do want to get recommended, and you do want to get merit in, you do want to join the Air Force Academy, right? So that's why I'm telling you, these 15 days will decide your fate, whether you are going to clear that examination or not. Do not play with it. It's just I wanted to make this video because a lot of guys, till the last point कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये पढ़ लो. Bang on, कुछ भी नहीं होने वाला. रिवाइज करो जो पढ़ा है, मॉक पेपर से अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो. जो लगता है कि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, वापस समझो. नए टॉपिक्स नहीं, पुराने वाले टॉपिक्स जो आपने किए. ठीक है. सो विद दैट नोट आई गेस कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होगी. हमारा जो भी रिवीजन है, सारी चीज़ें चल रही हैं साथ ब साथ. देखते रहो वीडियोस, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. पीडीएफ्स है, करते रहो, जो भी करना है करते रहो बस. ठीक है, रुकना नहीं है अभी. Fine. Remember, this is the time which is going to decide whether you are going to clear this examination or not. Do not play with it. Again, I'm saying this. Okay. So if you are new to this channel, guys, subscribe. Help करो थोड़ा सा आगे मोटिवेट करने के लिए. ठीक है. And thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.